स्क्रीन नजर आ रहा है आप सबको? जी अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, नजर आ रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टोपोलॉजी स्टडी किए थे। वोल्टेज सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी, वोल्टेज शंट फीडबैक टोपोलॉजी, करंट सीरीज feedback topology and current shunt feedback topology. So we have classes of four classes of feedback amplifiers. So depending upon what are our inputs and what are our outputs, if this is the amplifier circuit and this is the corresponding output. So if the input parameter is the voltage and if then the output may be voltage and may be current. Similarly, if the input parameter is current, the output parameter may be voltage or current. So there are four possible combinations. So if the input is voltage and the output is voltage, then such an feedback amplifier is called voltage amplifier. Input is voltage and output is voltage. This is input and this is output, and the gain is V naught divided by Vi, which is the voltage gain, and we represent this by AV. This gain is actually voltage gain. Similarly, if the input is voltage and the output is current, so then this is called transconductance amplifier. So in this case, the input is voltage and the output is current, and the gain in that case, we call it the transconductance. We represent this by Gm, and it will be I naught or Vi. So this is input and this is output. The third one, if the input is the current and the output is voltage, then this is trans resistance amplifier. II and V naught. This is the input and this is the output. So the gain, we represent this by Rm, is V naught or II. And the fourth one is the current amplifier.
input is current and output is current. So the gain in this case is AI and it is I naught or II. So these are the four classes of feedback amplifiers depending upon the input parameter and output parameter. So we have already discussed the topologies, four big feedback topologies. So we already studied. So whenever we use the term feedback amplifier, it means this is the negative feedback amplifier. So in amplifier, we use the phenomena of negative feedback, and in oscillator, we use the phenomena of positive feedback. So we discussed this thing in detail in the last lecture. Series topologies increase the input impedance, and shunt topologies, whether voltage shunt or current shunt. सर की आवाज़ हमें नहीं आ रही। तूने म्यूट ही नहीं की। अच्छा, तो जो सीरीज टोपोलॉजीज है ना, वो इनपुट एम्पीडेंस को इंक्रीज करते हैं, और जो शंट टोपोलॉजीज है वो इनपुट एम्पीडेंस को डिक्रीज करते हैं। जो वोल्टेज टोपोलॉजीज हैं, अगर वोल्टेज सीरीज और वोल्टेज फीडबैक जो हमारे पास है, तो वोल्टेज फीडबैक टोपोलॉजी अगर वोल्टेज सीरीज फीडबैक और वोल्टेज शंट फीडबैक, इन दोनों में जो है ना आउटपुट एम्पीडेंस डिक्रीज होता है। और जो करंट फीडबैक टोपोलॉजीज है, अदर सीरीज फीडबैक, करंट सीरीज फीडबैक और द करंट शंट फीडबैक, in both cases the output impedance increases. But the practical requirement, the overall requirement for an amplifier circuit should be high input impedance and low output impedance. So voltage series feedback topology provides these requirements, these needs. So now let's see example 4.1. Example 4.1. आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज आ रही है? हाँ? यस सर। Okay, so यस सर, यस सर। example 4.1. Example 14.1. Determine the voltage gain. It means AV, input and output impedance with feedback for voltage series feedback having A is equal to minus 100, Ri is 10 kilo ohm and R naught is 20 kilo ohm. So what is the data given? The topology is voltage series feedback topology.
So we have to determine AVF, RIF, R not F. These are the unknowns, and the knowns, the given data is A is equal to minus 100, RI 100, the 10K, 10 kilo ohm, and R naught is 20 kilo ohm. Sorry, R naught is 20 kilo ohm, 10 kilo ohm. Let's say just this is AF, let's say. This is the voltage gain. So these are the three quantities without feedback. So we have two values of beta minus 0.1 and beta is equal to minus 0.5. So beta is the feedback factor. In the first case, when A is equal to, when beta is equal to minus 0.1, we know that the feedback gain with feedback is A divided by 1 plus beta A. Putting all values in this expression, A is given, beta is given. When we put all these values, we get minus A is minus 10, 1 plus beta A. So the answer is 11, and we get minus 9.09. ZIF, we know the generalized formula ZI, because series feedback connection, input impedance will increase by factor 1 beta A. तो ये देखें गेन जो है ना reduced by factor 11, and the impedance will increase by the same factor 11. So the answer is ZI is 11, the 1 plus ZI is 11, ZI is 10K. So when we multiply this, we get 110 kilo ohm. ZOF, because it is series feedback topology, the impedance will decrease. 1 plus beta A by the same factor. सर जी बीटा ए क्या चीज हाँ, उसकी वैल्यू तो नहीं गिवन बीटा ए की वैल्यू आपने 10 कहाँ से लगाई बीटा ए की वैल्यू 10 कहाँ से लगाई और तुम्हारा जो है ना ये देखें मगज जो है ना आपका दिमाग काम नहीं कर रहा। बीटा जो है ना आपको माइनस 0.1 गिवन है, ये आपको गिवन है माइनस 100। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 100, द आंसर इज 10। तो 1 प्लस बीटा ए, मैं समझा आपको जो समझ आ रही है, तो ये तो मसला हो गया 11।
अभी समझ आ रही है? समझ आ रही है अभी? यस सर मैंने समझा था वो ए। यस सर मैंने समझा था ए में जो बीटा की वैल्यू गिवन है वो है नहीं नहीं नहीं, ए वो पार्ट ऊपर में। सारी चीज़ें गिवन है ना, ये डेटा गिवन है। तो दैट नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा ए, दैट नॉट इज 20 किलो ओम एंड डिवाइडेड बाई 11, so the answer is, मैं पूरा नहीं दिख रहा, 1.82 किलो ओम। तो आप देख रहे हैं गेन जो है ना वो रिड्यूस हो गया बाई फैक्टर 11, इनपुट एम्पीडेंस increases by factor 11 and output impedance decreases by factor 11। तो पहले केस में जो है ना आपके पास ये फैक्टर है 1 प्लस बीटा ए 11 के बराबर है। सेकंड केस में बी जो है आपके पास, सेकंड केस में बी बीटा आपके पास है -0.5, बीटा फैक्टर इंक्रीज हुआ तो ये जो डिनोमिनेटर फैक्टर है 1 प्लस बीटा ए भी इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो रहा है देखें, 1 प्लस -0.5 इंटू -100, द आंसर इज 50 प्लस 1, 51। तो 1 प्लस बीटा ए, तो ये देखें इस हिसाब से आपको पता चल रहा है कि ये जो फैक्टर है डिनोमिनेटर वाला गेन जो है ना रिड्यूस हो जाएगा इस फैक्टर से। गेन क्या हो जाएगा अभी, ए एफ किसके बराबर हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा ए, तो -100 डिवाइडेड बाई 50। आंसर क्या है आपके पास, बल्कि ये 51 है सर, 51 है सर जी। 51। So 51, the answer is -1.96. Similarly, ZIF वो बना 510 के, और ZOF जो है ना वो डिक्रीज होगा इसी फैक्टर से, हो गया 392.16 ओम। समझ आ रही इस बात की, इस एग्जाम्पल की समझ आ गई? यस सर। सो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ ये है कि हमने तो गेन को रिड्यूस कर दिया लेकिन साथ साथ जो दो पैरामीटर्स हैं वो इम्प्रूव हो गए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनपुट एम्पीडेंस हाई हो और आउटपुट एम्पीडेंस लो हो, तो दोनों फैक्टर, इसको कहते हैं इंजीनियरिंग में ट्रेड ऑफ। तो हमने ट्रेड ऑफ किया इनको। So example 14.1 demonstrates the trade-off of gain for improved input and output resistances. Reduce the gain by factor 11 from 100 to 9.09 is complemented by a reduced output resistance and increased input resistance by the same factor of 11. अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने जब बीटा फैक्टर को चेंज किया, पहले हमारे पास था पॉइंट 1 था, और फिर हमने 0.5 जो है ना वो इंक्रीज करके 0.5 बना दिया। तो
आपने देख लिया कि इससे जो है ना गेन पे, इनपुट एम्पीडेंस पे और आउटपुट एम्पीडेंस पे क्या फर्क पड़ा। तो इसको कहते हैं ट्रेड ऑफ। तो हमने गेन को ट्रेड ऑफ किया, गेन हमने रिड्यूस किया, बट बाय इम्प्रूविंग अदर पैरामीटर्स इनपुट एम्पीडेंस इंक्रीज हुआ और आउटपुट एम्पीडेंस डिक्रीज हुआ। और यही हम चाहते हैं कि इस तरह हो, एक एम्पलीफायर का इनपुट एम्पीडेंस इंक्रीज हो, उसका आउटपुट एम्पीडेंस डिक्रीज हो। तो इसको कहते हैं हमने गेन को ट्रेड ऑफ किया by improving the input impedance and decreasing the or reducing the output impedance. Any question? Sir, a basic question, sir. क्या क्वेश्चन है? Hello, sir. हाँ, बात करें अब। Sir, बात करें प्लीज। बेसिक क्वेश्चन क्या है? सर जी इसका ये क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर और एम्पलीफायर में क्या फ़र्क है? ट्रांसफार्मर में देखें पावर लेवल वही रहता है, सिर्फ वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं। ट्रांसफार्मर आपके पावर को चेंज नहीं करता। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ठीक है। ट्रांसफार्मर सिर्फ पावर ट्रांसफर करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट की तरफ। ट्रांसफार्मर है ना, ठीक है। ट्रांसफार्मर एज एम्पलीफायर काम नहीं करता। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करता है तो दूसरी तरफ करंट स्टेप डाउन हो जाता है। तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट है इनपुट साइड पे और आउटपुट साइड पे पावर का जो फार्मूला है, फिर दोनों साइड पे पावर बराबर रहता है आपका। लेकिन एम्पलीफायर आपको जो है ना, आपको गेन दे रहा है। okay, sir. समझ आ गई बात की? Yes, sir, I agree. ठीक है, सही, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर आपका सिर्फ वोल्टेज लेवल जो है ना इंक्रीज डिक्रीज करता है, पावर वही रहता है। सर लेकिन एम्पलीफायर में भी तो हम वही चाहते हैं कि वोल्टेज का लेवल इंक्रीज हो, सर। तो वोल्टेज का लेवल इंक्रीज हो, लेकिन साथ साथ जो है ना आप देखें करंट भी तो उसके साथ आ रहा है ना। तो आपके पास जो है एम्पलीफायर में पावर जो है ना वो ओके, आपका सर। पावर इंक्रीज होता है आपका। उसमें जो है ना पावर सेम रहता है। इनपुट पावर प्राइमरी साइड पे जो पावर है, सेकेंडरी साइड पे जो पावर है, दोनों बराबर होते हैं। और जो एम्पलीफायर है वो पावर जो है ना आपका एक लिहाज से वो अपनी पावर सप्लाई से, जो आपने बाइसिंग पावर बाइसिंग वो की होती है, बाइसिंग सप्लाई है, उससे ही वो पावर लेता है। डीसी पावर सप्लाई से वो पावर लेता है। तो मैं बात कर रहा था ट्रेड ऑफ की। तो ये ट्रेड ऑफ है, हमने गेन को ट्रेड ऑफ किया बाय इंप्रूविंग दी इनपुट एम्पीडेंस एंड आउटपुट एम्पीडेंस, इंक्रीजिंग इनपुट एम्पीडेंस एंड डिक्रीजिंग आउटपुट एम्पीडेंस। तो ये हमने गेन को ट्रेड ऑफ किया। सर जी ये ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है? ये जो है ना ट्रेड असल में बिजनेस टर्मिनोलॉजी है ना। ट्रेड कहते हैं ना, आप कहते हैं ट्रेड, जो तिजारत वगैरह, ट्रेड उससे ताल्लुक है। तो तिजारत में ये है कि आप कुछ चीज़ें आप लूज करते हैं, लेकिन साथ साथ और चीज़ें आप गेन करते हैं ना। तो आपने जिस तरह आप देखें, अभी अगर आप कहते हैं मेरे जी इंटरनेट की जो है क्वालिटी, कनेक्टिविटी, बैंडविड्थ इंप्रूव हो, तो आपने तो ट्रेड करना होगा। तो पैसा फिर आप क्या देंगे उसके उसके बदले आपको क्या जो है ना देना पड़ेगा। आपको पैसे ज़्यादा फीस, उसका फी जो है ना उसका कास्ट बढ़ेगा ना।
अगर क्वालिटी आप चाहते हैं तो आपने कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज तो करना होगा, कुछ चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज करना होगा। तो कंप्रोमाइज जो है in the form of reduced gain but increase input impedance and decrease output impedance। तो आप गूगल करें कि ट्रेड से क्या मतलब है, तो ये टर्मिनोलॉजी वहां से आती है। इंजीनियरिंग में ये टर्मिनोलॉजी है ट्रेड, TRADE यस सर, डबल समझ एड, आ गया। ठीक है ना, TRADE, ट्रेड ऑफ। सो आपने देख लिया। So feedback offers the designer the choice of trading away some of the available amplifiers, some of the available amplifier gain for other improved circuit features। अच्छा, ये जो हम फीडबैक अप्लाई करते हैं उसके कुछ फ़ायदे हैं, वो हमने उसके जो है ना जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है। तो ऑलरेडी हम जो है ना यहाँ पर जब हम फीडबैक टोपोलॉजी डिस्कस करते थे तो नेगेटिव फीडबैक के कुछ फीचर्स थे। जो इम्प्रूवमेंट्स हमें मिले वो इम्प्रूवमेंट क्या थे आपके पास, हायर इनपुट एम्पिडेंस, बेटर स्टेबलाइज वोल्टेज गेन, improved frequency response, lower output impedance, reduced noise, and more linear operation। So these were the improvements that we get by applying negative feedback phenomena। तो इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स या फीचर जो आपको मिल जाते हैं, इम्प्रूव सर्किट फीचर्स, उसमें कौन सी चीज़ें शामिल है। एक है रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन, रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। तो नॉर्मली जो है ना जो गेन होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करता है। गेन क्या करता है, फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करता है। तो जब हम नेगेटिव फीडबैक फिनोमेना अप्लाई करते हैं एम्पलीफायर सर्किट को, तो उसमें एक कंडीशन आपने देखना होगा। ये कंडीशन जो है ना, ये बीटा ए शुड बी मच ग्रेटर देन 1। इम्प्रूव्ड फैक्टर जो है ना हमारे पास, इम्प्रूव्ड फीचर, इम्प्रूव्ड फीचर, पहला फीचर जो है रिडक्शन, रिडक्शन इन रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। इसको हम डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद, अभी जो है ना ब्रेक भी हो जाएगा। यानी फॉर नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर बीटा